Okay, Bismillah, welcome back to bioinformatics and fifth and fourth section. So today we are going to discuss about protein structure determination as well as prediction. Okay, so if any, okay, how many students are there? Let me check. Let me set the chat as well as student check. Okay. Okay. So as far as protein structure is concerned, as we have already discussed in this part one lecture, a different structure of proteins, for example, alpha helix, beta sheets, beta turns like this. Okay. So now we are moving to the experimentally determination of protein structure. So there are two major approaches for protein structure determination. The first one is the X-ray crystallography, okay? And X-ray crystallography is a technique that's used to determine the three-dimensional molecular structure of a crystal. The method requires crystals and they need to be of certain quality and size. Growing good salts crystals is easy, but producing a crystal of a complex molecules like a protein is often met with failure. Okay, so we will discuss the complete flowchart of X-ray crystallography in the next slide. The second method that used for the determination of protein structure is the NMR, nuclear magnetic resonance. This is a technique used to determine the content, purity, and molecular structure of the sample. So this is the flow chart of X-ray crystallography method. Uh, the main drawback or the limitation of X-ray crystallography is to design or to form crystal of protein. This is a little bit difficult process, and the size of crystal is very important for X-ray crystallography. Okay, so first of all, we will extract protein from sample, then we crystallize, we convert protein into a crystalline form. Then the next step, we use X-ray crystallography and we use the X-ray. These X-ray, we if you are looking here, this is the X-ray coming from the X-ray source, and this is our protein. And the diffraction of rays, these diffractions determine the pattern of uh, amino acids and the atoms organized in the protein. Okay, then based on these the electron density, the 3D structure determined with the help of a computer. Similarly, this is same flow chart. This is the diffraction pattern, just like X-ray results. And then these are the electron density that can be obtained from the diffraction pattern. Okay, then based on these density map, electron density, the electron density is the main factor through which we can determine the position of atom. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देख लें तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है डेफिनेटली उन्हीं रीजन में एटम्स होंगे, राइट? इन दिस केस दिस इज अ स्पेस, अगर ये प्योर स्पेस है, so it means there is no any electron. If there is no any electron, the it means there is no atom in the structure, right? Then based on the electron density, okay, just your thing. So your phone.
Okay, so then based on this electron density, using computer different models, we convert atomic organization into 3D structure. Okay, then this will be the final model structure that can be obtained from X-ray crystallography, right? This was the flowchart of X-ray crystallographic procedure. Then, okay. Then the second method was the nuclear magnetic resonance protein structure determination. And if you are looking here, this is a complete flow chart. This is the first step in which we are trying to express our desired protein. Okay, then based on the protein that's expressed in the sample, we collect protein and purify using different protein purification method. Then the proteins may be different from different structure. If you are looking in this case, these are the proteins are obtained from the cell organelles. Okay, then this is the important steps. These steps are involved in the NMR method. Okay, so the importance of NMR methods we will discuss in the next slide. This is the basic comparison between X-rays and NMR method. So even X-ray crystallography method is an accurate method, but the limitation in this method is it can always be we need to work on protein based on in vitro. Okay, so the one of a good feature is the size of protein. Even हम more than 50 kb protein को भी हम crystallize कर सकते हैं easily. ओके और जो 3D स्ट्रक्चर है जो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक से हम ऑब्टेन करते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर. दिस इज अनदर NMR. Even it's accurate, its structure is accurate, but not as much accurate as relative to the X-ray crystallography. So but NMR की अपनी कुछ खुसूसियात हैं. उसकी खुसूसियात में से एक ये है कि दिस इज इन विट्रो मेथड. इन विट्रो मेथड है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोटीन को उसके नेचुरल फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं. और the third importance of NMR is नो नीड फॉर क्रिस्टल्स. हमें प्रोटीन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि वन ऑफ ए ड्रॉबैक ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. इसमें हमें प्रोटीन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो क्या होगा अगर हम प्रोटीन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, then definitely it will effect on the protein structure. ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट होता है. और जो वन ऑफ ए बिग ड्रॉबैक ये है कि हम नेचुरल डायनेमिक जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की उसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के साथ. ठीक है, और इस लिमिटेशन को पूरे करने के लिए अनदर मेथड है जो हम NMR के साथ करते हैं. सो अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप हाईली एक्यूरेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों अप्रोच को यूज करना पड़ेगा. राइट, these are the basic steps involved in these two approaches. So limitation of current experimental techniques. Limitation क्या है? This is the protein data bank that we have already gone through during our practical session. So there are more than 23,000 protein structures, which are validated using either X-ray crystallography or NMR. But you know, in case of Swiss prot, there are 100,000 proteins. ओके, 100,000 प्रोटीन सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो भी स्विस प्लॉट के अंदर है. अगर हम नॉन रेडंडेंट प्रोटीन की बात करते हैं ओवरऑल डेटाबेस लाइक NCBI की अगर हम बात करते हैं तो देन देयर आर मोर देन मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स.
ओके। सो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स है, उन सब का 100% 3D डिजाइन करना थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर के जरिए, सो इट विल बी लिटिल बिट, एक तो ये कि डिफिकल्ट है, दूसरा ये कि रिसोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। सो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। डिटरमाइन तो हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द हाई नीड ऑफ रिसोर्सेज, सो दैन द सेकंड स्टेप वी नीड इज द स्ट्रक्चरल प्रिडिक्शन। ठीक है। हम प्रोटीन, हम कंप्यूटर मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स के जरिए हम जितने भी प्रोटीन, अननोन स्ट्रक्चर प्रोटीन है, उनको स्ट्रक्चर, उनका 3D स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्शन, दिस इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन इंजीनियरिंग, और उसी की बेस पे एक 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन की बेस पे हम उस ड्रग डिजाइनिंग में भी उस 3D स्ट्रक्चर, प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हैं, और जितने भी जो अदर्स बायोलॉजिकल रिसर्च है, उनमें हम 3 प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ओके। Then these are the protein structure prediction approaches. So the basic approaches that are used in the 3D structure predictions are homology based, threading based, hierarchical based, and ab initio method. Okay, we will discuss each topic in the coming slides. The first topic is homology modeling. Homology, the word you already familiar with this. Homology means similar or homologs. So in this case हम ये करते हैं कि हम ऑलरेडी एक नॉन प्रोटीन जो जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए या एनएमआर के जरिए वैलिडेटेड किया गया हो, उसका स्ट्रक्चर हम लेते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं। दूसरे अल्फाज में, दिस इज रेफरेंस बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, रेफरेंस बेस्ड मॉडलिंग। So in this case, we need a homologous protein structure, और homologous protein structure हम कहाँ से collect कर सकते हैं? PDB. Okay, PDB is the main source of protein structure with high accuracy. So PDB के जरिए या PDB से ही हम data retrieve कर सकते हैं. Then, based on those reference proteins, we can predict the structure of our target protein. Okay. Then इस स्ट्रक्चर के दौरान जो ओवरऑल प्रोसीजर में वन स्टेप इज द बैकबोन मॉडलिंग। ओवरऑल जो बैकबोन है उसकी मॉडलिंग होती है। बैकबोन के बाद देन द सेकंड स्टेप इज द साइड चेन मॉडलिंग। Okay, side chain modeling में, you know, in case of amino acids, that the R or the side chains are the very important in the contribution of protein structure. So the drawback of homology modeling is it can fail in the absence of homology. क्या है? अगर आपके पास similar protein नहीं है, then we cannot use this modeling method. Okay, this is the major drawback of homology modeling. And अगर हम even अगर 25% तक भी sequence identity हो, then even it can give a better results for the 3D structure. And limitation we have already discussed. अगर homology या similar proteins अगर absent है, then we cannot predict our target sequence. This is the cutoff value. अगर below than 25% हो pairwise identity, then we cannot use this homology method. ठीक है? Okay, these are the requirements for the homology modelings. We need a query sequence, means target sequence. जिस sequence को हम 3D structure में convert करना चाह रहे हैं, वो required है. The second is the database of known protein that's already available at PDB, protein data bank. So हमारे पास already दोनों चीजें हैं. हम
इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑलरेडी, इफ यू आर लुकिंग, लेट मी शेयर द स्क्रीन। During our practical session, we have already gone through this homology modeling based. If you are looking here, where is the protein structure? Where is practical session? Mutation, this introduction, protein function, homology base. Yes, this was our practical tutorial. That's 100% related to our today lecture. ठीक है, इसके अंदर we have completed, we have predicted a structure of unknown sequence. आप इसको go through कर सकते हैं, ठीक है. This is totally related to our today lecture. ओके, आप लोग इसको भी go through करें और फिर देखें, एक टारगेट प्रोटीन सीक्वेंस ले लें और इस ट्यूटोरियल को go through करें. Then finding, what will be the finding? Definitely in the first step, we will get similar protein. Then at the end, we can predict our target protein structure. Okay, so this is the flow chart of homology modeling approach. We have, let's suppose we have a target sequence, and then we will search similar sequence in the database using similarity analysis. Then we will then at the background our sequence will align with the database sequence. Okay, multiple sequence ki base pe. Then this is the known sequence that's already available in the PDB, and this is multiple sequence again. Iske baad, based on similarity, our sequence will fall into 3D structure. Okay, then we can also check the quality of 3D structure using Ramachandran plot. That's we already discussed in previous class. Okay, हम ये check कर सकते हैं कि जो हमारा predicted protein है उसकी quality क्या है. Either it is acceptable or not. If this is acceptable, then we will move to the next step. But if it is not acceptable according to the Ramachandran plot, then we will go back to the similarity searching and alignment again. Okay, then this is the second heading, that's threading based method. Threading based method is a little bit new method as compared to the homology based. Okay, before going to the threading based, you should know in case of homology based हम complete जो protein है complete protein length को और structure को compare करते हैं in case of protein homology. Okay, so but possible है कि कुछ proteins ऐसे भी हो जो डिफरेंट हो, कुछ पार्ट किसी दूसरे प्रोटीन से सिमिलर हो और दूसरे उसके कुछ पार्ट किसी नेक्स्ट प्रोटीन से सिमिलर हो. सो इस केस में हमें एक न्यू अप्रोच की जरूरत है. सो इस लिमिटेशन को पूरा किया है यूजिंग threading based method. Threading based method, this is a new based method, and in this case, okay, this will clear you about the mechanism of threading based. इसमें आप देख लेते, this is our sequence, query sequence, target sequence, and at the background of the analysis, what happened, our sequence divide into small fragments like this. Then these fragment convert into secondary structure based on the physiochemistry of the amino acids. इसके बाद then these fragments align with the known fragment. जो already known fragment होता है database के अंदर, there will be a fault databases for this type of protein modeling. ठीक है, हम इसको भी देखेंगे. I think we have already performed the fire 2 method.
Have you gone through the 5-2 protein prediction method? Okay. So, okay, we will provide the tutorial for fire-to protein method. That's totally based on the threading-based method. Now, again, come to the introductory part of threading-based. Sequence is tried to fit in non-structure. हमारे पास जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है that's divide into the fragments. उसके बाद based on the physiochemistry protein these fragments fold itself and form motif like structure. ठीक है? Then these motifs like structure search in the database of motifs और जो सिमिलर होंगे उसके साथ ये कंपेयर की बेस पे कंपैरिजन की बेस पे अगेन इसके अंदर भी जो फॉल्ट रिकॉग्निशन है इसमें भी आ, जो फोल्डिंग है वो सिमिलरिटी के बेस पे होता है. होमोलॉजी के अंदर ये था कि हम कंप्लीट प्रोटीन होमोलॉजी कंपेयर कर रहे थे कंप्लीट स्ट्रक्चर को. बट इन केस ऑफ थ्रेडिंग we divide protein sequence into the fragment, then we compare each fragment with the already known structure. Okay, so again a limitation of this method is it can fail in the absence of known example. अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रैगमेंट हो प्रोटीन जिससे सिमिलर अगर हमारे पास डेटाबेस में कोई फॉल्ट या स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है then we cannot use this threading method. Okay, then these are the basic requirement for the threading based. Again, we need a sequence and a non-database. And what will be the result? The result will be most reasonable for protein fragments, P for the protein fragments. Then the evaluate quality of such arrangement. जो भी arrangement है उसकी quality check होती है. At the end अगर वो suitable है तो हमारा जो target protein है वो completely arrange होता है 3D structure के अंदर. Okay. So this we have already discussed. Let this, okay. So these are types of alignment and the fold alignment. Especially ये देखें आप देखें कि these are small folds motifs. छोटे छोटे motifs हैं जो हमारा target protein है वो reference motifs के साथ align हो रहा है. These different color are representing different folds. Okay. So for example, in this case, RMSD, this means root mean square deviation. This is 5.5 angstrom. जितना ये जो root mean square deviation value कम होगी, it means the structure will be more accurate. Okay, अगर आप देख रहे हैं तो similarly in this case, this is a little bit different for of our target with the reference अलग है, but in this case the root mean square deviation is 2.2. It means it is more accurate. Similarly, if you are looking here, okay, in this case, this is 0.7. So it means it's highly similar protein. Okay, similar fold. So based on these folding and alignment at the end, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो this is इसके हिसाब से अलाइनमेंट हो रही है. फर्स्ट स्टेप एक अलाइनमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर अगेन ये बना है, उसके बाद इस प्रोटीन केस में मोर देन वन मोटिव्स आपस में इसको अलाइन करने के बाद अरेंज करने के बाद इसको दोबारा अलाइन किया. देन इन दिस केस अगेन जो दूसरे मोटिव्स हैं उनको भी अलाइन किया. मींस छोटे छोटे जो मोटिव्स हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स वो आपस में पहले फोल्ड होता है. देन दीज फोल्ड जॉइन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. जो हमारा सीक्वेंस उसी हिसाब से जॉइन होता है और फोल्ड होता है. उसके बाद फाइनल आपके पास 3D स्ट्रक्चर आता है. दिस इज अ थर्ड मेथड, hierarchical method. Hierarchical method is a
protein method that's used only for secondary structural prediction. ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं those are aligned based on the against similarity with respect to the alpha helix and beta sheets. जितने भी alpha helix और beta sheets हैं, beta sheet में convert होने के बाद दोबारा से इनकी alignment होती है, intermediate. Okay, instead of predicting tertiary structure of the protein from the amino acid sequence, ये क्या है, secondary structure को predict करता है. Then based on secondary structure information we can arrange protein into tertiary structure. Okay, limitation, the accuracy little bit, इसकी accuracy कम है, इस वजह से हम इस method को ज़्यादातर use नहीं करते. The accuracy is only 70 to 80%. So this is her last method, an AbInitio method, which is one of the most advanced method. And all those limitations which we discussed in the previous headings or the previous methods covered in this method. Okay, so this is just like de novo based method. De novo based की तरह है. अगर आपके पास कोई रेफरेंस डेटा अवेलेबल नहीं है या डेटाबेस के अंदर अगर सिमिलर प्रोटीन नहीं है, या पहले हमने होमोलॉजी मॉडलिंग में डिस्कस किया, अगर टारगेट सीक्वेंस की सिमिलरिटी किसी जो डेटाबेसेस में lower than 25% हो, then उस केस में हम प्रीवियस जितने भी मॉडल्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, so in this case we need an advanced method so that advanced method is AbInitio method. The aim of this method is to find the fold of native protein by simulating the biological process of protein folding. इसके अंदर जो टोटली प्रोटीन फोल्डिंग होती है वो बेस्ड ऑन द अमाइनो एसिड फिजियोकेमिस्ट्री. ठीक है, अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइनो एसिड की फिजियोकेमिस्ट्री, यू नो देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, सो ईच अमाइनो एसिड हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी. सो बेस्ड ऑन the property of amino acids, the linear chains convert into 3D structure. This is a very difficult method because the protein chain can fall into millions of different conformation. जैसा कि हमने during the Ramachandran plot we already discussed कि एक प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड्स डिफरेंट कंफर्मेशन में हो सकता है एक ही टाइम पर. ठीक है, ओके, जस्ट वेट. So it used only when no detectable homologs are available in the database. The method can also be used for fault recognition in case of extremely low homology. ठीक है, या conversion rate या जो क्यूरी कवरेज रेट वेरी लो हो, उस केस पे भी हम AbInitio मेथड यूज करते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ AbInitio मेथड, ITezer. Do you know about ITezer? How many students are familiar with ITezer? Please raise your hand, let me know. Raise your hand if you are hearing me. No one is familiar with this. Why? Okay, any other student? It means most of you did not where is that platform?
Okay, even in this tutorial, we have already gone through about iTeaser. This is iTeaser. These are the results of iTeaser. ये आप देख रहे हैं. So please आप लोग इस tutorial को भी go through करें. ठीक है? It will help you to understand about AbInitio method. What is the time? Okay, now we have only 3 to 5 minutes for the discussion. If you are looking here, this is the complete flow chart of AbInitio method or the iTeaser server. Okay. So what's happening in the background? This is the sequence, means target sequence, and this method. This is most advanced method. ठीक है, iTeaser इस वक्त जो सबसे ज़्यादा advanced tool है protein structure prediction के लिए वो है iTeaser. Okay, because it included multiple approaches. इसमें आप homology approach को भी देखेंगे, threading को भी देखेंगे और at the end AbInitio को भी देखेंगे. Okay, for example, if you are looking here, look at this. This is threading based. जो फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होता है, थ्रेडिंग होता है. अगेन थ्रेडिंग. अब थ्रेडिंग में क्या है, a protein sequence divide into fragment and fold itself the self. Then threading के बाद टेम्पलेट, हम डेटाबेस में से टेम्पलेट भी लेते हैं और टेम्पलेट के साथ जो जितने भी फ्रैगमेंट्स है उसको हम अलाइन करते हैं. इफ यू आर लुकिंग हियर, then next is structure assembly. These may be results for a single amino acid. अगर हम एक अमाइनो एसिड हम सीक्वेंस हम सॉरी एक प्रोटीन सीक्वेंस अगर हम इनपुट दे रहे हैं, तो इससे पॉसिबल है कि मिलियंस या थाउजेंड्स में प्रोटीन स्ट्रक्चर असेंब बन जाए सिमिलरली. ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. देन नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग मींस उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ठीक है और उनको आपस में क्लस्टर किया जाता है, मिलाया जाता है. ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप फर्दर वेबसाइट से पढ़ सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू द फ्लो चार्ट ऑफ द iTeaser. ओके, सो आपके एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका बैकग्राउंड में एल्गोरिथम में क्या है, बट you should know these steps, कौन कौन से steps involved है. Okay, then clustered contrite, then this is structure reassemble. Already यहाँ से structure जो assemble होता है उनको further check किया जाता है, उसके बाद again reassemble होता है. then lowest energy, उसके बाद check किया जाता है कि lowest energy जो free energy है उसकी बेस पे मॉडल करता है. देन फाइनल मॉडल, आपके पास फाइनल मॉडल बनने के बाद इसको टीएम अलाइन सर्च होता है. टीएम अलाइन के अंदर दिस इज द अलाइनिंग मेथड. इसमें हम जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम अलाइन करते हैं रेफरेंस के साथ. ओके, और इसके अंदर that iTeaser also use PDB library. PDB library भी यूज करती है ये वेबसाइट, राइट. then this will be the final structure. एंड के ऊपर हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर होता है. अगर आप iTeaser रिजल्ट्स को देखें तो आप उसमें सबसे पहले सीक्वेंस को देखेंगे, सीक्वेंस को कन्वर्ट किया होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सर्च किया हुआ होगा डिफरेंट डेटाबेसेस में. उसके बाद I think it will be better if you go through from here. ये देखें, this is the results of iTeaser. ये आप देख रहे हैं टॉप थ्रेडिंग टेम्पलेट. टॉप थ्रेडिंग टेम्पलेट जो iTeaser ने यूज किए हमारे सीक्वेंस से सिमिलर. ओके, ये टॉप 10 थ्रेडिंग है. थ्रेडिंग इज स्मॉल जो फ्रेगमेंटेड की बेस पर या फोल्ड की बेस पे टॉप 10 थ्रेडिंग
डेटाबेस से जो मिला है वो ये है। उसके बाद अब अगर आप आगे देखते हैं तो प्रिडिक्ट नॉर्मलाइज बी फैक्टर। ओके, बी फैक्टर के अंदर ये देखा जाता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जिस पोजीशन के ऊपर है उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। ओके, then top 5 model, where is the top 5 model? These are the similar proteins found in PDB। ठीक है, फाइनल स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद जो टारगेट प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो स्ट्रक्चर सर्च होता है पीडीबी में। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी अगेन, देन एट द रिजल्ट it will find top 10 similar structure in PDB। Okay, in this case, these are the IDs of PDB database. Okay, then what is the next? Next is okay. So there are many other factors and the parameters also included in the ITaser. Therefore, we consider this is the most advanced tool for protein structure prediction। Okay, अभी तक जो आईटीजर के मुकाबले में कोई और मॉडल हमारे पास नहीं है जिससे हम मोर एक्यूरेट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सके। ओके, सो this was our today lecture। Now we will move to the discussion part। Okay, if there is any question, please let me know। Please rejoin for the discussion portion।